In this one, we are सबसे पहले तो we are quickly reading the indexation of CA final IDT. Then what we will do afterwards, एक बार हम देखो indexation देख लेते हैं. तो इसमें ideally what I am going to do is I am thinking about and making plan for reading the FTP which is of 5 marks. I may say the camera. So the camera is here only. Okay. So I have to look here. So simply I want to say that I am making a plan to read foreign trade policy and I know this कि जो foreign trade policy है वो 5 marks का आता है. I am looking here only but the camera is here. Okay. So what I want to actually I want to see the screen as well. So I want to simply say now we are reading foreign trade policy. This is C. Surinder Mittal sir notes AIR 5. तो सर के नोट्स काफ़ी कंसाइज है बट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हर फैकल्टी ने जो है कट शॉर्ट कर रखी है चीज़ों को. तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बार तो इससे रीड करते हैं टू द एक्सटेंट, सारी चीज़ों को रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या मतलब सब कुछ दिया है. एंड देन वी विल रीड फर्दर थिंग्स एज सो करेक्टली. तो देखिए, तो currently we are reading the foreign trade policy. So let's quickly get into the video, and this is obviously the student channel and we are simply discussing the same. Now we need to move to the page 8.1. अब 8.1 क्या ऐसे नहीं आएगा इतना आसानी से. 8.1 is the last page of this PDF and this is the phone screen. हमें क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि एग्ज़ामिनेशन में अगर इवन इतना सा मतलब कोई भी क्वेश्चन यूजुअली क्या होता है कि एक्सपोर्ट हाउस से क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है. समटाइम दो स्कीम है, वन इज़ जिसमें 10% 15% ऐसा कुछ आता है, वहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं. तो FTP में क्वेश्चन यूजुअली मतलब जो क्वेश्चन तो ड्राफ्ट होते ही होते हैं. ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ कि FTP में से क्वेश्चन नहीं आया है या फिर क्वेश्चन वहाँ से आ नहीं रहा है. तो क्वेश्चन फ्रॉम FTP इज़ वेरी कॉमन. वन में से अब नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस. तो देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है. अबाउट दिस चैप्टर, in this chapter discussion will revolve around various schemes available for importer and exporter under foreign trade policy. About the foreign trade policy, that is FTP. Basic about foreign trade policy. Central government issue करता है foreign trade policy with powers from the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. तो ये तो बस बेसिक्स दे रखा है, तो यहाँ से आइडियली कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट वगैरह नहीं होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद पावर्स फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992. FTP is governed by Union Ministry of Commerce and Industry of India. FTP is updated every year. FTP is given effect through issue of notification, so actual benefit depends upon language of notification. Director General of Foreign Trade DGFT क्या होता है. FTP is formulated, controlled and supervised by the Office of Director. जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट होता है, कंट्रोल होता है, सुपरवाइज होता है बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT along with the coordination from RBI, CBIC, State GST Department, etc. Decision of DGFT is a final and binding in respect of interpretation of FTP. DGFT issue various authorizations in Importer-Exporter Code for import and export.
Various committees under DGFT. Policy Interpretation Committee to aid and advise the DGFT. Norms Committee Fixation or Change of Input-Output Norms. Policy Relaxation Committee for all other issues. Importer Exporter Code EIC. देखो जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है वो एक 10 डिजिट कोड है लाइक अ पैन नंबर और प्रोबेबली द पैन नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है पैन नंबर. The import export code is a 10-digit code PAN number which is mandatory for import and export. जनरल प्रोविज़न रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ जनरली फ्री होता है एक्सेप्ट इफ़ एनी आइटम इज़ अगर इम्पोर्ट जनरल प्रोविज़न रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है इसमें? तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो जनरली फ्री होता है इफ़ एनी आइटम इज़ जनरली फ्री एक्सेप्ट अगर इफ़ एनी आइटम इज़ अगर कोई स्पेसिफिकली कोई आइटम प्रोहिबिटेड है मतलब नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, रिस्ट्रिक्टेड है. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इज़ अलाउ ओनली on authorization and permission, that is second hand laptop AC. Exclusion for state trade enterprise ST, only STEs can import, only STE जो है वो import और export कर सकता है, that is the Food Corporation of India ONGC etc. तो देखो आइडियली व्हाट यू थिंक कि यहाँ पे कुछ समझाने जैसा है कि हमें जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो, बी प्रैक्टिकल. तो देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है. तो अबाउट दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है FTP विद पावर्स फ्रॉम दी फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस वगैरह. FTP इज़ गवर्न बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दिस इज़ ऑल्सो बेसिक, मतलब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है जैसा कोई बात है क्या? FTP इज़ अपडेट किया जाता है एवरी ईयर. FTP इज़ गिवन इफेक्ट थ्रू इशू ऑफ नोटिफिकेशन, सो एक्चुअल बेनिफिट डिपेंड अपॉन लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन. उसके बाद देन कम्स दी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. FTP फॉर्मुलेट किया जाता है कंट्रोल एंड सुपरवाइज बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड along with the coordination from RBI, CBIC, state GST department. Decision of DGFT is a final and binding in respect of interpretation of FTP. DGFT issue various authorization and import-export code. अब ये various committee under DGFT policy interpretation committee to aid and advise the DGFT norms committee fixation or change of input-output norms. Policy relaxation committee for all other issues. अब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC एक 10 डिजिट कोड है पैन नंबर जो कि मैंडेटरी है फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जनरल प्रोविज़न जो कि रिलेटेड है टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए. तो प्रोहिबिटेड मतलब नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं है. रिस्ट्रिक्टेड यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ अलाउ ओनली ऑन ऑथराइजेशन एंड परमिशन, दैट इज सेकेंड हैंड लैपटॉप AC. रिस्ट्रिक्टेड है. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ अलाउ ओनली और ऑथराइजेशन एंड परमिशन. ऑथराइजेशन एंड परमिशन पे ही अलाउ किया जाएगा जैसे कि सेकेंड हैंड लैपटॉप AC. एक्सक्लूसिव फॉर स्टेट ट्रेड एंटरप्राइजेज, ओनली ST कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ONGC एक्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद आता है देन कम्स दी जनरल एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर. अब इसमें है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स. In each district, 2 से लेकर 3 high potential product may be prioritized and for such a product plan for export growth may be implemented. तो in each district 2 से 3 potential product may be prioritized and for such a product plan for export growth may be implemented. Various benefit will be given to promote the export for such a product from such a districts that help in production, marketing, एक्सपोर्टेशन एक्सेट्रा. अब हमारे पास आता है दैट इज़ दी स्टेटस होल्डर्स. तो देखो यहाँ से तो MSc की क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है एंड ये लिमिट आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं आती होगी. 3, 15, 50, 200, 800. तो ये तो अगर इफ़ यू रेड ऑलरेडी IDT तो यू नो दिस कि स्टेटस होल्डर्स. अब देखो यहाँ पे स्टेटस होल्डर्स का मतलब पता होना चाहिए. उसके बाद कैटेगरी ऑफ स्टेटस होल्डर जैसे कि 1 स्टार 1 2 3 4 5. तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार 3 4 5, 3, 15, 50, 200, 800. तो यू नो दिस थिंग. देखो how will you cover the same? तो all exporters having the import export code number and which is how many digit, 10 digit, you know. sometimes ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि HSN में कितने मतलब कितने का टर्न ओवर हो तो HSN में इतनी डिजिट होनी चाहिए.
तो EIC के लिए भी पूछा जा सकता है. We never predict how the institute will draft the question and all. तो all exporter having the import export code number are eligible for status based on. जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है वो एलिजिबल है फॉर स्टेटस बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. The category of status holder, it is a 1-star export house, 2-star export house, 3-star export house, 4-star export house, and 5-star export house. And minimum export performance, these all are 3, 15, 50, 200 और चलो. It is in USD dollars. FOB value of export earning is 3, 15, 50, 200, 800. ठीक है, ये हो जाता है. देन comes here export performance also covers the supply in form of deemed export. In case of deemed export, INR value of export performance is converted into USD using exchange rate on the 1st April of each financial year. Unit in northeastern state, Jammu and Kashmir, Ladakh, Sikkim, MSME or unit having ISO, BIS certification shall be given. Double weightage for calculating status of 1-star export house. Such a status granted to any exporter is not transferable. What will be the benefits क्या होगा और privileges of being status holder? 2-star and above status holders are permitted to set up export warehouse. अगर 2 स्टार या उससे ऊपर का, अगर 2-star and above status holder are permitted to set up export warehouse. Authorization and custom clearance for both import and export on a self declaration basis. उसके बाद हमें बोला जाता है लाइक 2-star and above status holders are permitted to set up export warehouse. Authorization and custom clearance for both import and export on a self-declaration basis. Input and output norms are fixed within 60 days by norms committee. Status holders are entitled to preferential treatment and priority handling of consignment. Exemption from bank guarantee requirement. उसके बाद वी हैव दिस स्कीम दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स. वी हैव कि कैसे हम हमारी कंट्री से जो प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उनको कैसे प्रमोशन किया जाए. तो ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम फॉर इनपुट एंड रॉ मटेरियल. अगर इनपुट और रॉ मटेरियल कंट्री से बाहर जा रहा है तो उसके लिए वी हैव स्कीम लाइक एडवांस ऑथराइजेशन. इंस्टीट्यूट ऑलरेडी आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन. इस पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक इन नॉट इन May 26 अटैम्प्ट बट इन January 2026 अटैम्प्ट. एडवांस डिफरेंस बिटवीन ऐसा कुछ क्वेश्चन था. एडवांस ऑथराइजेशन मतलब इन्हीं स्कीम्स पे था. एडवांस तो हम क्या करते हैं, ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम्स फॉर जब आप एक्सपोर्ट करोगे इनपुट और रॉ मटेरियल तो उसके अंदर भी हैव स्कीम लाइक एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन. उसके बाद ड्यूटी रेमिशन स्कीम फॉर इनपुट और रॉ मटेरियल. ड्यूटी रेमिशन मतलब ड्यूटी जो है, एक तो ड्यूटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एक ड्यूटी रेमिट होगी, यानी कि छूट मिलेगी. रेमिशन इज़ व्हाट समथिंग वी रेमिटेंस मिलेगा. तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट दैट इज रोड टैप. तो इसमें 2 स्कीम आती है, एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक, एक रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट रोड टैप. अनदर ड्यूटी बेनिफिट स्कीम जिसमें आएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EOU, EHTP, STP एंड BTP एंड डीम्ड एक्सपोर्ट. उसके बाद आता है हमारे पास देन कम्स दी एडवांस ऑथराइजेशन. अब देखिए एडवांस ऑथराइजेशन में क्या, तो अब हमारे पास जो ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम है उसको हम सिंपली पढ़ रहे हैं. तो ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम में हमारे पास आ रहा है एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट authorization. So we have advance authorization. Number 1 we have advance authorization, then duty free import authorization, advance authorization, DFIA duty free import authorization. Advance authorization में क्या होगा, what will be covered under advance authorization? What is advance authorization? Facility to import inputs used in manufacturing of export product, physical export, deemed export as well as supply to SEZ without payment of duty. तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन? एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है? फैसिलिटी टू इम्पोर्ट इनपुट्स. व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन? फैसिलिटी टू इम्पोर्ट इनपुट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. तो फैसिलिटी टू इम्पोर्ट करेंगे हम इनपुट्स को
जो भी यूज़ हो रहा है किस में, मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जैसे कि फिजिकल एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट एज वेल एज सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बिना ड्यूटी का पेमेंट। देखो आइडली आई एम रीडिंग द टैक्स बिकॉज FTP पे इतना हम यूजुअली पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं डालते हैं। आई नो दिस इज़ अ 5 मार्क्स चैप्टर, इट इज़ वर्दी ऑब्वियसली, बट उस पर इतना वेटेज नहीं होता है तो हम यूजुअली उसको ऐसा रीड कर रहे होते हैं। तो आइडली आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस टाइम ऑल्सो कि एक बार क्विकली मैं इसको रीड कर देती हूँ, एंड जहाँ पे भी आई थिंक कि कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आई विल सिंपली वॉच CA सुरेंद्र मित्तल सर वीडियो ऑब्वियसली। बट वाई आई एम डूइंग first by reading myself and then watching the video as a second step, because if I watch video in my first app then I will feel like I'm feeling sleepy, I'm not focusing, I'm not getting interest. So this is the purpose. I read the things first by myself and then shift in the second step as a video where I will collect the things where I find difficulty. So if you think I'm not explaining something, so probably I'm getting that, or probably I'm waiting for the next step to cover in the next step. So this is the way I read usually. तो देखो व्हाट इज़ एडवांस ऑथराइजेशन क्या है। तो वी नो दिस इज़ द ड्यूटी एग्जाम्पशन स्कीम्स, वी हैव एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA, इट इज़ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन। तो एडवांस ऑथराइजेशन फैसिलिटी टू इम्पोर्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, export deemed export as well. I will try that after my step 2 will finish, or when I complete my step 2 I will try to summarize the things what I understood, what where I was finding difficulty in my step 1. I will try to summarize step 1 and 2 in step 3, where I was quickly sharing about the summary of the FTP or all the chapters, where I will feel कि हाँ step 1 में I read by myself, step 2 में I understand more concept in of step 1, and step 3 I will summarizing the things. So what is advance authorization? Facility to import inputs used in manufacturing of product, export products, physical export, deemed export as well as supply to SEZ without payment of duty. Eligibility क्या होगा इसका? An exporter will be eligible for opting this scheme if he holds authorized economic operator certificate AEO or 2-star or above status, and apply for the grant of AEO certificate. AEO is authorized economic operators. आइटम्स जो कि एलिजिबल हैंगे फॉर इम्पोर्ट अंडर दिस स्कीम, फॉलोइंग इनपुट्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन में ये जो इनपुट्स है कैन बी इम्पोर्ट किए जा सकते हैं अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। इनपुट फिजिकली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, कैटलिस्ट कंज्यूम इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मैंडेटरी स्पेयर्स अप टू 10% ऑफ CIF वैल्यू। तो कौन से आइटम्स है जो कि एलिजिबल है फॉर इम्पोर्ट अंडर दिस स्कीम? तो फॉलोइंग इनपुट्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। इनपुट्स जो कि फिजिकली यूज़ किए गए हैं इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, कैटलिस्ट कंज्यूम इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मैंडेटरी स्पेयर्स अप टू 10% ऑफ CIF वैल्यू। देन ड्यूटी एग्जाम्प्टेड, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, IGST एंड कंपनसेशन। कौन सी ड्यूटी एग्जाम्स है? तो BCD एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, IGST एंड कंपनसेशन सेस, एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। तो कुल मिला के जितनी भी ड्यूटीज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो सारी तो एग्जाम्प्ट हो गई। यूजुअली हम क्या कंप्यूट करते हैं, BCD करते हैं एंड सोशल वेलफेयर सर्चार्ज उस पर लगा देते हैं। तो ड्यूटी क्या हुई? बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई। उसके बाद और कौन सी ड्यूटी है? IGST एंड कंपनसेशन सेस हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी। तो जो फेमस ड्यूटीज़ है वो सब तो एग्जाम्पटिव बताया जा रहा है यहाँ। Basis of advance authorization. Advance authorization is issued on the basis of standard input-output norms, self-declaration, and norms established by norms committee. Standard input-output norms means standard quality of inputs required to produce the output.
ठीक है. आफ्टर डैट वी नीड टू रिकॉल, ये सारा हो गया कि बेसिस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह. उसके बाद व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर अवेलिंग एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को अवेल करने की क्या कंडीशन होगी. तो प्री इम्पोर्ट कंडीशन, imported input must be physically incorporated in export products. So input must be procured before manufacturing of export items. तो आपने input खरीदा हो before manufacturing of export items. Actual user condition, it means input goods imported against advance authorization cannot be transferred even after completion of export obligation. इसका मतलब ये है, इट मीन्स इनपुट गुड्स इम्पोर्टेड अगेंस्ट, जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट द एडवांस ऑथराइजेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन इज 15%. हाउ विल यू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू एडिशन? विल बी ए माइनस बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100. उसके बाद आएगा हमारे पास A is equals to export value FOB realized in forex FOR if deemed export. C will be CIF value of input under authorization. Notional value of input given free of cost by buyer is to be added in both A and B. Time limit क्या है? Import shall be made. What will be the time limit? जो भी आपका इम्पोर्ट है shall be made within 12 months from the issue of advance authorization validity period. Export shall be made within 90 days from clearance of import consignment. तो हम क्या बोलते हैं? Import shall be made within 12 months from issue of advance authorization, that is the validity period. Export shall be made within 90 days from clearance of import consignment. Advance authorization for annual requirement. This scheme is available only for exporter having export performance in at least 2 preceding financial years. Scheme is available only for item for which standard standard input output norms is notified and not in case of ad hoc norms. Such a person shall be entitled for import of CIF value 300% of FOB value of physical export in preceding financial year FOR in case of deemed export और 1 crore whichever is higher. इन दोनों में से जो भी हायर होगा. तो लिमिट्स आ जाती है. सच पर्सन शेल बी इंटाइटल फॉर इम्पोर्ट ऑफ CIF वैल्यू 300 ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. 300% of FOB value of physical export in preceding financial year or 1 crore whichever is higher. Duty free import authorization. What is duty-free import authorization scheme? Facility to import inputs used in manufacturing of export product, physical export, deemed export as well as supply to SEZ without payment of duty. कौन से items eligible है for import under duty-free import authorization? Following input can be imported under duty-free import authorization. Input physically used in manufacturing of export product, oil, fuel, catalyst consumed in production of export product. Import of tires is not allowed under duty free import authorization. उसके बाद ड्यूटीज़ एग्जाम्प्टेड. अब यहाँ पे कौन सी ड्यूटी? देखो, हम जब बाइफिकेशन बनाएंगे तो एडवांस जो हमारी एडवांस ऑथराइजेशन उसमें बहुत सारी ज़्यादा ड्यूटी आ रही थी एग्जाम्प्ट वाली. अब इसमें ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट है, तो ये बाइफिकेशन हो जाता है, परसेंटेज का हो जाता है. उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. Duty-free import authorization is available only for items for which standard input-output norms is notified. Condition for availing duty-free import authorization scheme. No pre-import or actual user condition. Duty-free import authorization is issued on a post-export basis. Duty-free import authorization is not issued if pre-import or actual user condition is prescribed for any input. मिनिमम वैल्यू एडिशन अब यहाँ पे कितना है? 20%. उसमें कितना था? 15%. देखो मैं आपको दिखा देती हूँ. मिनिमम वैल्यू एडिशन उसमें कितना था? 15%. इसमें कितना है? 20%. तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें थोड़ा सा रिटेन रहना, तो हमें बाद में हम पढ़ेंगे तो वापस हम रिविजनरी वीडियो भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा रिटेन होगा. खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, यूजुअली नहीं चल पाता है, हमें खुद से भी रीड करना पड़ता है. तो हम खुद से रीड करके वीडियो देखते हैं तो और ज़्यादा रिटेंशन हमारा बढ़ जाता है, मेरी डेफिनेशन में. बाकी सबका अलग हो सकता है. उसके बाद द टाइम लिमिट एक्सपोर्ट शेल बी मेड विद इन 12 months फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन.
Common point for advance authorization scheme and duty-free import authorization scheme. Prohibited and restricted item. Import and export of prohibited item is not allowed. However, export of prohibited items is allowed under advance authorization if specifically notified. Import export of restricted item is allowed unless specifically disallowed. Items कौन से reserve है for STs? Import of items reserved for ST is not allowed. Export of item reserved for ST is allowed if no objection certificate is obtained from such STs. Holder of advance authorization and duty-free import authorization can procure goods domestically or from the STs. Then comes the duty drawback. Various schemes are available to make duty-free import as discussed above, but if exporter is unable to avail such a scheme, he can avail duty drawback scheme to get back the duty paid on input used to make export not available in respect of GST. Duty drawback is available in following two cases. Imported goods are exported in the same condition. Imported goods are used as input for production of export goods. In case of import is made partly on a payment of duty and partly duty free, benefit of both duty drawback and advance authorization can be availed. Remission of duty and taxes on exported product road tab क्या है? What is road tab scheme? हम क्या बोलते हैं that? What is road tab scheme? This scheme is introduced to refund any taxes or duty paid at a central, state or local level which otherwise is not allowed as a refund or remission in any other scheme. Rebate is given in a form of freely transferable e-scripts which can be used to pay only BCDs. Rebate shall be granted as a fixed percentage of FOB with a value cap per unit. Known availability of road tab scheme. Road tab scheme is not allowed on deemed export or supply of DTA to SEZ unit. Goods which are subject to minimum export value or export duty. Goods which are used after manufacturing. Goods which are restricted or prohibited. Goods which are manufactured in custom warehouse. Goods which are exported in same or substantially same form. देखिए तो we have read the two schemes which was simply regarding the exemption जिसमें exemption थी. अब हम दो स्कीम पढ़ेंगे वापस और जो कि किससे रिलेटेड होगी जो कि ड्यूटी रेमिशन स्कीम है. ओके वी रेड एडवांस ऑथराइजेशन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ये हमने पढ़ लिया है एंड उसके बाद वी हैव कॉमन पॉइंट्स फॉर ये तो हमने पढ़ लिया है आई थिंक. Common point for advance authorization and duty free import scheme. Prohibited and restricted item. Import export of prohibited item is not allowed. However, export of prohibited item is allowed under advance authorization if specifically notified. Import export of restricted item is allowed unless specifically disallowed. Item reserved for ST. Import of item reserved for ST is not allowed. Export of item reserved for ST is allowed if no objection certificate is obtained from such ST. Holder of advance authorization and duty free import authorization can procure goods domestically or from STs. अब ड्यूटी फ्री अब हम क्या बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक. व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? Various schemes are available to make duty-free import as discussed above, but if exporter is unable to avail such a scheme, he can avail duty drawback scheme to get back the duty paid on input used to make export. Not available in respect of GST. Duty drawback is available in following two cases. Imported goods are exported in the same condition. Imported goods are used as input for production of export goods. In case of import is made partly on a payment of duty and partly duty free, benefit to both duty drawback and advance authorization can be availed. उसके बाद आता है हमारा then comes the remission of duties and taxes on exported product road tab. तो इस पर क्या है ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स है. What is road tab scheme? Road tab scheme क्या होता है? This scheme is introduced to refund any taxes, duties paid at a central, state or local level which otherwise is not allowed as a refund or remission in any other scheme. Rebate is given in a form of freely transferable e-scripts which can be used to pay only BCD. Rebate shall be granted as a fixed percentage of FOB with a value cap per unit. Known availability of road tab scheme. Road tab scheme is not allowed on a deemed export or supply by DTA to SEZ units.
goods which are subject to minimum export value or export duty, goods which are used after manufacturing, goods which are restricted or prohibited, goods which are manufactured in custom warehouse, goods which are exported in a same or substantially same form. Export Promotion Capital Goods. What is EPCG? EPCG क्या? What is EPCG scheme? This scheme permits export to import capital goods on a payment of zero custom duty or procure indigenously without paying duty, and such a good shall also be exempt from IGST and GST compensation sales. In return, he need to fulfill the export obligation in defined time period. Then comes the eligible exporter, manufacturer exporters, then merchant exporters, then service providers. Eligible capital goods in a completely or semi knockdown condition, in a completely capital goods in a completely or semi knockdown, completely knockdown condition या फिर semi knockdown condition. Spare molds, dies, jigs, fixture or tools, computer system and software being part of imported capital goods. Condition for availing EPCG scheme. Actual user condition. Actual user condition shall be applicable till completion of export obligation. Time limit. Import shall be made within 24 hours from the date of issue of authorization. Then export obligation. Export obligation consists of average export obligation, average EO, and specific export obligation, specific EO. Average EO means average of export performance in the preceding 3 years for same or similar product. Average EO has to be fulfilled in every financial year till export obligation is completed. Specific EO is equivalent to 6 times of duty or tax or SAS saved in 6 years from the date of issue of authorization. Specific EO in addition to average EO. If exporter achieves 75% of specific EO in high period 3 years, and rest export obligation will be waived. EOU, EHTP, STP and BTP. What is EOU, EHTP, STP and BTP? EOU is an export oriented unit. EHTP is Electronic Hardware Technology Park. STP is a Software Technology Park. BTP is Biotechnology Park, undertaking to export their entire production. Such a unit may export all kinds of goods and services except prohibited items. Trading units are not covered. Then comes duty-free import. Such a unit may import without paying BCD, additional duty, IGST and compensation sales, or procure from DTO on a payment of GST. Actual user condition. Condition for availing benefit by OU, EHTP, STP and BTP units. Actual user condition. Actual user condition shall be applicable, so input must be used for exported product. Minimum investment कितना होगा? Minimum investment shall be rupees 1 crore. However, minimum investment criteria is not applicable for EHTP, STP and BTP. EOU in handicraft, agriculture, animal husbandry, IT, brass, hardware and handmade jewelry sector. Net foreign exchange earnings. Such a unit shall be net foreign exchange earner. Net foreign exchange earnings shall be calculated cumulatively in a block of 5 years. Unable to utilize imported input goods. If EOU, EHTP, STP, BTP is unable to utilize imported goods, it may transfer to another unit on a payment of GST. Destroy within unit with custom permission, dispose of in DT on a payment of a duty, export such imported goods. Exit from scheme. Such a unit may exit from scheme on a payment of applicable tax and penalty if obligations are not met. Deemed export. Cases of deemed export. Goods manufactured in India shall be considered as a deemed export even goods have no left India in following cases. Supply of goods against advance authorization or duty free import authorization. Supply of capital goods against EPCG authorization. Supply to units located in EOU, EHTP, STP, BTP. Supply to mega power project or project notified by Department of Economic Affairs. Supply to nuclear projects. Supply to United Nations or international organization for their official use. Proceed from deemed export. Proceed of such a supply may be received in INR or foreign exchange. Then comes the
this chapter this chapter is of 5 marks, and that is the reason why students skip this chapter, because this chapter is theoretical. We have to learn the limits. Few topics are interesting, like the 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star export house, the limits of the USD in millions, जो उसका टर्न ओवर है, एंड कुछ स्कीम्स अच्छी है. अदरवाइज तो 10 चैप्टर इज़ वेरी टाइम टेकिंग, आई मे से. Benefit of deemed export, but no worries, we will complete obviously this chapter. Benefit of deemed export, eligible for advance authorization and duty free import authorization. Drawback is available on import used in deemed export, refund of terminal excise duty. Various miscellaneous provision क्या होंगे, samples. Then come duty-free import of sample is allowed up to 3 lakh without any authorization. However, authorization is required for defense or security items, vegetables, seed, bees, new drugs. Export of sample of a freely importable items is allowed without any limit. Imported of gifts through post or courier is prohibited. However, Rakhi and life-saving medicine can be imported on a payment of a duty. Export of gift is allowed to rupees 5 lakh in a financial year except restricted goods. Waste or scrap. Imported metallic waste or scrap should not contain hazardous, toxic, radioactive waste, etc. Any waste or scrap generated during manufacturing by SEZ may be cleared in DTA without authorization and payment of duty. Merchant exporter, third party exporter. Export document, shipping bill of export contain name of both merchant exporter and original manufacturer. PRC export order and invoice should be in the name of merchant exporter. देन आता है हमारा इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. कैपिटल गुड्स, restricted AC, DG, SAT, desktop computer, refurbished parts of laptop. Use IT assets imported from SEZ or notified electronic and IT goods. Freely importable refurbished spares of capital goods with 80% residual life, second hand goods other than restricted. Other than capital goods, freely importable, imported for repair, refurbishing, reconditioning, etc. Restricted remaining goods, export proceeds. For all applicable cases, export benefits shall be available even if contract and invoice are issued in INR, provided the consideration has been received in convertible forex. If exporter fail to realize proceed in forex within time limit given by RBI, then all the benefit and incentive have to be returned to the extent of known realization. देन आता है हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स. फॉलोइंग ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स आर प्रोवाइडेड अंडर FTP. Free passage will be provided to export consignment and export related stock shall not be seized. Just a minute, I want to see something. This is the page number नहीं आ रहा है. We have to this, we need to cover the last page and this FTP will be wind up. ओके, ईजी है, आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर था. एक बार हम पढ़ते देन वी विल डिस्कस फर्दर. देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर. फॉलोइंग ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स आर प्रोवाइडेड अंडर FTP. Free passes will be provided to export consignment and export related stock shall not be seized. Single window to facilitate export of perishable agriculture produce. Implementation of Niryat Bandhu scheme for mentoring of new and potential exporters. DGF2 online customer portal for providing information on various online facilities. IT initiative for paperless and transparent environment for availing export benefit scheme. Then 24/7 help desk facility to assist the exporters. Public suggestion on a trade facilitation measures. Central government may seek a suggestion views from various stakeholders and may provide 30 days for that purpose for submission of their views. Central government not bind by the views of such stakeholders and may provide a reason for not considering their views. Central government not obliged to provide a reason in the following cases: may adversely affect the trade relation with any foreign country, may adversely affect the food, economic and natural security of India, in conflict with government policy, strategic program, international obligation, long-term phase, unrelated to trade, serve a private purpose contrary to broader public interest and require disclosure of confidential information.
Then comes the denied entry list, that is concerned regional authority of DGFT can place a firm under denied entry list in such a case following restriction are imposed on such a firm. Refusal for grant or renewal of license, authorization, certification or financial or fiscal benefit. Blockage of printing issue, renewal of all new license, authorization, certificate. Firm name can be removed from DAL if firm complete export obligation pays penalty fulfill requirement of demand notice by the RA कोई authority होगी. देखो तो FTP में ideally what we all read till now, because इसमें तो इतना ही समराइजेशन में भी है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा रेलेवेंट पार्ट नहीं था. देन उसके बाद वो जो लिमिट्स थी कि स्टार हाउस वाला वो वाला, और उसमें वो जो डेफिनेशन होती है कि मतलब जिनको वो स्टार्स वगैरह दी होती है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका क्राइटेरिया, उसके बाद वी हैव दी ड्यूटी एग्जामेशन स्कीम्स दो, देन ड्यूटी रेमिशन स्कीम दो, और एक और वो था जिसमें रोड टैप और वो था, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी एग्जामेशन, ड्यूटी रेमिशन एंड अदर ड्यूटी रेमिशन में वी हैव ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रेमिशन ऑफ ड्यूटी, एंड ड्यूटी रेमिशन में वी हैव ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एक और था रेमिशन ऑफ ड्यूटी रोड टैप वाला. उसके बाद अदर ड्यूटीज़ में भी हैव EPCG, EOU, EHTP, STP, BTP एंड डीम्ड एक्सपोर्ट. ये सारा हमने आइडियली रेड किया है. एंड इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो आई विल रिकलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम वन मोर नोट्स फ्रॉम CA Riddhi Bagmar notes. So we will try to read from that notes also tomorrow probably. And otherwise FTP is all about this. If you score 515 तो you can simply ना लर्न कर लो ये चारों स्कीम्स. तो लर्न मतलब 4 तो लर्न करना ही है हमें. ड्यूटी एग्जामेशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम और जो दूसरी मिसलेनियस स्कीम्स है, ये सारी 5 और 6 जितनी भी है ये सारी हमें लर्न करनी है. एंड आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, और वी कैन मैनेज दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू. So see you in the next one.